Hello, and welcome back to RiffScript presents All Fingers and Thumbs. पहले तो मैं अपने आप को भी वेलकम बैक कर लेता हूँ और आज का जो टॉपिक और आज के जो गेस्ट है वो मतलब इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. जो टॉपिक है वो बिकॉज कभी कभार मैं भी कुछ लिख लेता हूँ और हम सभी कहीं ना कुछ लिख तो लेते ही हैं. वी ऑल आर राइटर्स, आई बिलीव. है ना जैनिश? करेक्ट. बिकॉज राइटर्स क्या है? स्टोरी टेलर्स है, राइट? तो वो कोई भी एक राइटर जो पोयम लिखता है तो वो कोई ना कोई उसकी कहानी कहता है. तो हम सब एक स्टोरी टेलर तो है ही, और हमारे अंदर एक लेखक या फिर पोएट या फिर राइटर जो आप कह लो वो एक छुपा हुआ. तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ मैनकाइंड, राइटिंग, पोएम्स, स्टोरीज, इन सबका एक कनेक्शन रहा है मैनकाइंड के साथ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. जैसे पहले थे शेक्सपियर, थे एलियट, थे जो वेस्टर्न कल्चर में. हमारे वहाँ ईस्टर्न में थे राहत इंदौरी. फिर पहले थे तो जॉन आलिया थे, गुलजार है, गालिब थे. वैसे बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स, स्टोरी टेलर्स हमारे बीच हैं. बट आज के जो हमारे गेस्ट है, not only she has a master's in economics degree but she has also done her studies in psychology. वो एक टीचर भी रह चुकी है. अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी बुक लिखना शुरू किया है, तो उनकी जो एक चैप बुक है पोएट्री की वो भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है. मुंबई से है और अक्सर ये लिखती है, फिर पढ़ाती भी है. आजकल ये मीडियम पे अपने बुक्स रिव्यूज भी देती है, खुद के ब्लॉग्स भी लिखती है. तो इससे पहले कि हम उनका वेलकम करें, जेनिश, अभी मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था और आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ज्यादा चलती है, तो एक ये शेर आया था कि नींद से क्या शिकवा, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं, कसूर तो उन सपनों का है जो सोने नहीं देते. आई एम श्योर आप लोग भी अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं और हम सब भाग रहे हैं बेसिकली, और कहीं ना कहीं उसमें नींद कॉम्प्रोमाइज होती ही है. पर दैट्स व्हाट लाइफ इज. सो लेट्स वेलकम मिस हुमायरा कापड़िया फ्रॉम मुंबई. बात है. But yeah, great seeing you guys. Thank you so much for having me. I'm really excited. This is my first time ever on a podcast, so I'm so excited. We too are excited because we always wanted to do this on reading, writing and poetry, because he's Harshverdhan. He lives in Sydney. He also writes. I also like to write, and you are a jack of all trades, so we wanted to do this podcast anyway. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. I'm just I enjoy writing. It's definitely like, I mean, it was life changing for me when I started writing. I think back in like 2017 is when I properly started writing. Okay. Yeah, and I've been consistently writing every day from 2017. So the thing is that I've always, so my school, actually, I would take it back to my school. We had such amazing English teachers who always, made us think and question everything and look at texts critically, all of that. So that base was there. But then college happens, you get busy with, you think about, okay, life में क्या करना है, वो सब चीजें रहती है, तो ये सब writing वगैरह थोड़ा बहुत छूट जाता है. But 2017, I had just, graduated. I had some time to think about कि अगली चीज करना है, क्या करना है. So I started keeping a journal. I still have like a journal with me right now. This is the 2021 journal that I have. So I just thought कि ठीक है, journal मुझे सिर्फ to do list करना है, कुछ थोड़ा बहुत लिख दूंगी दिन के बारे में. And I started writing ऐसे ही, कुछ सोचा नहीं, कुछ no long term plan. And then 2017, 18, 19, 20, 21, I have my journals, the yearly listing. So it's like a mix of, okay, a poem somewhere, a reflection something, kuch ho gaya, kuch pada acha laga, to wo likh diya, aise. So yeah, so this journaling. So of course, I also write on my, the phone notes. So iPhone has the notes. That is more of stuff that
that is just incredibly personal to me that I don't want anyone to read because of course phone कोई भी ऐसे password रहता है कोई खोल के देख नहीं लेता. Journal again, my privacy is respected. No one opens my journal, but that's more of like just general observations, जो book में पढ़ा, or your more of like your daily goals. So this dual system of journaling as well as note taking kind of really made me realize that, okay, when I'm writing now, I'm actually in my mind, it's all very chaotic. But when I give those thoughts, those intangible, those emotions, all of that, when I put it in words on paper, it seems very therapeutic. मतलब ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है कुछ हल्का हुआ है, So so that is my experience with writing. And then I slowly 2019 I started with blog and a mix of book reviews and spirituality, and अभी poem डालने लगी हूँ. I'm also into academia, so that writing is also there. So it's like I like writing about everything and anything, whether it's book reviews or whether it's like proper academia वाली writing जिसमें आपको reference करना है, research करना है, poetry जिसमें आप सिर्फ अपने लिए और कुछ feel करने के लिए और लोगों के लिए लिख रहे हैं, वैसी type of writing भी है. So writing, though, of course, there's just so many options. People love writing fiction. People love writing, about history. Or, one of my close friends, she writes horror fiction. So there's just so much to do. And and I kind of haven't decided what's my favorite type of writing, but I think right now it's poetry. So I thought, okay, Janice and me, we connected on Instagram. So we was like, so we were like, what kya kare podcast? So I was like, okay, poetry kar lete hain. Poetry ke बारे में. Yeah, because poetry, मतलब poetry हमें भी बहुत पसंद है. हम मुझे उर्दू आती नहीं, लेकिन मुझे उर्दू लैंग्वेज से प्यार इसलिए उर्दू इसलिए. आपको हिंदी आती है ना? हाँ. हिंदी उर्दू काफी सिमिलर है. सिर्फ थोड़े बहुत जो अल्फाज है, फॉर एग्जाम्पल अल्फाज इज वर्ड्स, आई वुड से शब्द इन हिंदी थोड़े बहुत. माय मदर टंग इज उर्दू, बट आई आल्सो लव हिंदी बिकॉज आई एम इंडियन एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. तो मुझे हिंदी उर्दू दोनों बहुत पसंद है. दोनों अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन है. So Hindi, so that's fine. मतलब वही उर्दू की खासियत यही है कि जो कुछ शब्द है जैसे अल्फाज, या फिर आपने कुछ जो उसमें जो शब्द है ना जो स्पेसिफिक आप लोग यूज करते हो, दे आर सो सेटिस्फाइंग. मतलब ऐसे सुन के सुकून मिलता है. जी जरूर. So much of Bollywood has अरिजीत सिंह से आतिफ असलम को देखो तो उर्दू तो है ही, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है. और आई थिंक किसी ने मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला, लेकिन किसी ने बोला कि आपको इश्क करना है तो उर्दू सीख लीजिए, और अगर उर्दू सीखना है तो इश्क कर लीजिए. सही बात. मतलब मुझे तो उर्दू के लिए मेरा प्यार ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे मैं गुलजार को पढ़ता हूँ, या फिर फैज अहमद या कोई भी ऐसे जो हमारे राइटर्स या पोएट्स है, उनको पढ़ने के बाद ज्यादा ही मतलब प्यार उमड़ आता है. मैं हर कहीं पर भी कुछ भी फोटोग्राफ हो या कुछ भी हो, तो मैं वहां पर ढूंढता हूँ कि वहां उसको उर्दू से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते. सही है. एक्चुअली उर्दू की शायरी बोलो या जो भी बोलो, पोएट्री वगैरह, मेरे माय ग्रैंडफादर, माय मदर्स फादर, आई कॉल हिम नाना अब्बा. So he still has that passion, and he's always reciting, and he just turned 79 on the Teachers Day actually, and he still remembers each and every poem of, like, his memory is like he has this photographic memory. So all my bachpan I have heard his stories and his recital of Urdu poetry, तो वो भी काफी एक impact रहा है. उन्होंने मम्मी को सिखाया, मम्मी ने हमें सिखाया. मम्मी भी उर्दू लिखते हैं, so I can read that and reflect on that. So that that childhood influence and my grandfather's influence is also really strong in
propelling me towards, I think, maybe subconsciously, but जी जरूर उसकी वजह से तो उर्दू की तरफ थोड़ा खिंचाव और पोएट्री की तरफ खिंचाव भी जरूर रहा है। और मतलब मुझे लगता है कि उर्दू लैंग्वेज ऐसी है ना, तो मतलब कोई नॉर्मल चीज को अगर वो बोलते हैं ना कि पैकेजिंग अच्छा हो जाता है, उर्दू की वजह से कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो या कोई भी बात कर रहे हो तो उसका पैकेजिंग इतना अच्छा हो जाता है कि सामने वाले को बहुत मीठी लगती है सेम चीज। अगर सेम चीज किसी और लैंग्वेज में बोले और उर्दू में बोले तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। एंड आई कैन इमेजिन कि आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा शायद, मतलब अभी ऑब्वियसली यू हैव बीन लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुंबई में ही जन्मे हैं और यू बीन ब्रॉट अप देयर, राइट? तो बट आई कैन इमेजिन कि क्योंकि मुंबई या हिंदी है ना, जो इट इज लाइक काइंड ऑफ वेरी क्या बोलते हैं, एकदम तू तड़ाक वाली हिंदी है, और आप उर्दू तो तहजीब आप का फर्क होता है ना, तहजीब। Yeah, so I feel like when you want to like when I would be really like angry or frustrated, I switch to the Bombaya Tutarak wali language. And when I'm more in a nice mood, then I will always be like Aab, Janab, Shukriya. Otherwise, I'll just be like Seko, Meko, that Mumbai type. So that switch is there to kind of like mix things up and keep it fun and also unpredictable. कि किसी को क्या पता कि ठीक है ये कोई अच्छी उर्दू बोलने वाली है या कुछ बम्बैया वाली, whatever. So yeah, at home we speak in Urdu only, but like we obviously, of course, there is also the Western influence is there, through, of course, we're always whether it's Instagram or any social media, we're always on we're reading and taking content in through English. So obviously there's a mix of like English, there's a mix of that Bombay Hindi that we're talking. There's also Urdu, and we also, being Muslim, we have a lot of Arabic going on. So there's a little bit of Arabic also in the middle, like we'll just be like Inshallah, Mashallah, or something, Yallah, or just something in Arabic. So it's like 4 languages into one in the household conversation. So it's pretty exciting. तो लगता है कि एक साइकिल जैसा होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से ह्यूमंस ने लैंग्वेज को डिस्कवर किया, जैसे ही हमने इवॉल्व होते होते हमने लैंग्वेज को डिस्कवर किया, हमने ये भी सीखा कि लैंग्वेज से हम पोएट्री कैसे कर सकते हैं, राइटिंग कैसे कर सकते हैं। साथ साथ ये भी हुआ कि वो राइटिंग और पोएट्री की वजह से लोगों की लैंग्वेज भी मतलब बेटर होती गई। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा था कि मुझे उर्दू वैसे नहीं आती, मैंने आई हैव नॉट स्टडीड उर्दू, बट जब भी मैं कोई भी शेर या कुछ पढ़ता हूँ किसी भी पोएट का, मैं उसके हर एक वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करता हूँ या फिर खुद से कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, तो लैंग्वेज अपने आप में सीखता रहता हूँ। वो हमेशा एक साइकिल जैसा रहता है ना कि लैंग्वेज की वजह से पोएट्री आई और पोएट्री की वजह से लोगों की लैंग्वेज भी improve हुई। Yeah, definitely. I agree. What you said is actually really, really beautiful. And of course, I think language, I mean, just any appreciation of any language is so important because this is what differentiates us from other living creatures, right? Yes, of course, animals, they do have brains and I mean the same organs and they're living and breathing. But do they, I mean, linguistically, like, do they communicate like us? And of course, there have been linguists. For example, one of my favorites, Noam Chomsky, because he's amazing. Like, if you read any of his books in literature, so I mean, he talks so much about like this whole idea of we were born with it. It's not something that we didn't. Of course, it's a theory, but I think it makes sense in this because. Yeah, like we were born with it. Like, kids, they understand and they say stuff like without being taught. So there's some sort of programming already within us. That's of course another whole. I feel like that's another philosophical and theological discussion I don't want to get into. But what I'm trying to say is that we want to communicate. We want to appreciate literature and art and poetry, and that's what differentiates us humans. इंसान को दूसरे जानवरों से, and we have that creativity and we want to express ourselves and we want to be loved and appreciation like get that appreciation for our expression. So that literally is communication, and without poetry
I mean, I feel like it's for like just added prose, just prose, which is अपना normal, अपने हमारी जो stories रहते हैं, वो natural language नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से scholar ने ये बोला था, but मैंने एक book में पढ़ा है कि poetry, not added prose, is the original language of man. True. तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ह्यूमंस ने जब भी पोएट्री या राइटिंग को डिस्कवर किया या फिर स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया हो सकता है ना। एक ये कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ, व्हाटएवर आई एम फीलिंग और व्हाटएवर इमोशंस दैट आई एम गोइंग थ्रू, आई नीड टू एक्सप्रेस दोस, जस्ट लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर, राइट, कि आपको जो भी थॉट्स आता है आप जर्नल में या फिर फोन में लिख लेते हो कि आपको था कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। तो एक ये वे है कि एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। और दूसरा ये है कि टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी, ह्यूमन सफरिंग। मतलब जितने भी राइटर्स, जितने भी पोएट्स हैं, सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोसाइटी को पिक्चराइज करने के लिए, मतलब मिरर दिखाने के लिए, जो हम नॉर्मल डेज में रूटीन में इग्नोर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे साथ नहीं है लेकिन सोसाइटी के बहुत हिस्सों में है, जो हम खुद इग्नोर करते हैं, लेकिन पोएट्री राइटिंग से वो हमें मिरर दिखाने की कोशिश की जाती है। हाँ, definitely I agree. I mean, I feel like change, any sort of change making, it begins first with an idea, something intangible, something abstract. Then you probably want to write it. You want to write about it. You want to make sense of it. You want to communicate it to other people. And then you try to get some sort of like networking, some sort of social connection through that. And then because one person alone may not be able to create that much change if you want to in a society, like you were saying, कोई suffering है, आप कुछ देख रहे हो इस शो, आपको change करना है, तो आप अपनी पहली शुरुआत ऐसे writing से करते हो. Also, like even just generally, also like now I'm hopefully getting into academia, so that will be first, we will be writing अपना thesis वगैरह जो भी लिखना है, उसको publish होकर उसको फिर present करके फिर हम चाहेंगे कि वो society में apply हो. तो हमारा जो रिसर्च है वो अप्लाई हो. तो उसी तरह पोएट्री भी काफी सारी चीजें हैं जो शायद मैं किसी को स्ट्रेट अप ऑन द फेस नहीं बोल सकती, बट वो जो दुख दर्द है या जो भी इमोशन है, मैं उसको पोएट्री में, जरूरी नहीं है फर्स्ट पर्सन, ठीक है मैं थर्ड पर्सन से एक्सप्रेस कर दूं और मेरा मैसेज तो जा ही रहा है. और इनफैक्ट वो थोड़ा ज्यादा जोश से मैं लिख रही हूँ, because I know कि no one can call me out for it. It's just a poem. Don't take it personally, So उस तरीके से भी मैं poetry के through मैं change make कर रही हूँ, because I'm making people feel something about it. कि भाई ये हुआ है, ये गुस्सा है, या ये दर्द है, या ये प्यार है, जो भी है. And then people, and you know what? One of my favorite writers, Dale Carnegie, he said कि human beings are not creatures of logic. We are creatures of emotion. No matter how much we try to deny it, of course, we try to think, ठीक है हम बहुत rational है. Economics में भी मैंने पढ़ा है कि हम बहुत, सबसे पहला assumption कोई भी theory में, humans are rational creatures. But no, psychology also taught me, behavioral economics also taught me कि human beings are actually very predictably irrational. So हमारा जो emotions है, that is something that can be used to, it can be used to make a lot of good change or bad change. You can be a Hitler or you can be Nelson Mandela. It's just, I mean, the emotions, the power, everything is the same, but it's how you express it and how you want to make use of those emotions and your writing and your poetry for the larger good in the society. हमने मतलब हम राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मतलब आई कैन राइट इन 240 कैरेक्टर्स, आई कैन राइट इन लॉन्ग फ्रेजेस, बट आई कैन नॉट राइट दोस प्रोज, मतलब जो शेर शायरी जो बोलते हैं, जो 2 लाइन में लिखी जाती है, जो पोएम्स के पार्ट में होता है ना, वो मुझसे नहीं लिखा जाता. तो व्हाट इज द क्रिएटिव प्रोसेस बिहाइंड creative process? Honestly, I feel like सबका सब अलग होता है. You just have to keep trying at it. I do sometimes believe कि हाँ ठीक है, कोई लोगों में inbuilt होता है, but I personally also believe कि
अगर इनबिल्ट नहीं है आप में, अगर आपको किसी को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे में राइटिंग का टैलेंट नहीं है, पोएट्री या शेर वगैरह, but I can still try. I can still be consistent with it. And there's a lot of writing that you have to realize that, okay, fine, this really sucks. Matlab, I can't show it to people. But that's what you first you write for yourself. You don't judge your work. Not every of your poem has to be it doesn't have to be exceptional. Yeah, it doesn't have to be a masterpiece. You just have to keep at it. And I think consistency and some sort of discipline. Also, one of like the best writers in the world, they take writing as a full-time job. You know, they don't think about, a few people do, but most people don't think about कि मुझे इससे कितना पैसा मिलने वाला है, मुझे वो सब motives ठीक है humans के लिए. I'm not saying कि money is a bad thing, none of that, but what I'm trying to say is that if I want to be good at writing, I have to keep at it. I have to have that spirit of कि ठीक है आज इतना अच्छा नहीं लगा, मेरी हर पोएम अच्छी नहीं है, काफी मतलब जब मैं अभी 2 साल पहले की मेरी पोएम्स देखती हूँ तो I'm just like I wrote that, but no, again I have to be careful with that self critic कि भाई मुझे जज नहीं करना है, मुझे सिर्फ लिखना है. Good and bad, that's the secondary. First you just worry about emptying your thoughts on paper, you know, whether it's maybe you think okay I want to write a poem, but then you start writing and there's something called free writing, right? So free writing is when you just like someone gives you some sort of prompt and you just start writing whatever comes to your mind, and you stop only when you want to. And it can be a poem, it can be a paragraph, it can be fiction, it can be your reality, it can be a letter to yourself, whatever it is. So that sort of process, free writing, has really, really helped me to not judge myself कि भाई अच्छी कैसी होगी. All that judgment, I know there will be that voice in your head, but you have to give yourself time. You have to be consistent, and you have to remember कि भाई ये free writing है, ये सिर्फ मेरी आंखों के लिए है. I'm not obligated to show this to anyone. Of course, you can go ahead and show your writing to whoever you want. Showing your work is also important to try to gauge कि ठीक है भाई अच्छा लगा कि नहीं. फीडबैक चाहिए मुझे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए, वो सब लेकिन बाद में. पहले यू राइट फॉर योरसेल्फ. आई पर्सनली बिलीव दैट. उसमें जो आपने बोला ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाला, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके सर्कल में कोई आपके जैसा कोई राइटिंग में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन फिर भी आपका फ्रेंड हो, आपका फैमिली मेंबर हो, तो वो आपको अच्छे ही रिव्यू देगा, क्योंकि उसके लिए आपने जो 2 लाइन आपके लिए ज्यादा इतनी अच्छी नहीं है, मास्टरपीस नहीं है, लेकिन जो बंदा कभी लिख नहीं सकता या फिर लिखा नहीं किसी ने, उसके लिए वो सेम 2 लाइन मास्टरपीस हो सकती है. नहीं, बट मेरा इसमें यही है कि सॉरी आप पहले. Before I forget, I'm saying तो एक काम करना चाहिए कि हमें ना हमारी जो राइटिंग है ना, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए तो आपके दुश्मन को जाके देना चाहिए. दुश्मन या someone you hate, or someone who hates you. You know why? Because Abraham Lincoln said, I don't like that man, I must get to know him. So if you want to get criticism and if you can handle it, of course constructive hona chahiye, but like yeah, just if you want that sort of criticism, then give it to someone who you know doesn't like you very much, and you can they'll be honest because they don't really like you. So they'll they'll criticize you. Yeah, sorry Harsh, you were saying. हाँ, मैं वही कि मेरा जो प्रोसेस है, मतलब पहले मैं यही करता था कि मेरा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर मेरी सिस्टर है, उनको ये मेरा काम दिखाता था. बट देन इट्स लाइक अभी जब व्हेन आई मेक माय वीडियोस और एनीथिंग, आई हैव लाइक 4 or 5 पीपल whom I can rely on. तो उसमें से एक जैनिश है, तो लाइक आई कॉल हिम अप एंड आई एम लाइक ओके ये है तो देख कैसा है. तो ही इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज रिव्यूज. तो आपने ये कहा, ये though like it's like not Jainish doesn't like me, ऐसा कुछ नहीं है. मैं सोच रहा था कि
नहीं, Yeah, ऐसा of कुछ नहीं, course. and it's और वो जो मतलब sharing your poem or your work with anyone, it's like एक आपको एक तीसरा पर्सपेक्टिव दिखाता है जो स्पेक्ट्रम आपने सोचा भी नहीं कि ये भी हो सकता था या फिर लोग ऐसे भी समझ सकते थे, राइट? तो that's what like I also do. So मुझे जब जैनिश ने बोला कि यू नो यू आर इनटू एकेडेमिया, देन आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, साइकोलॉजी भी पढ़ा है, एंड देन नाउ यू आर गोइंग टू लॉन्च योर बुक, तो मेरे को ये लाइक आई हैड दिस थॉट कि इन सारी चीजों का कुछ तो रिलेशन होगा ना, मतलब जब आपने शुरू में इकोनॉमिक्स पढ़ा, देन यू मूव्ड ऑन टू साइकोलॉजी, देन यू स्टार्टेड राइटिंग, तो इसका कुछ तो रिलेशन बना होगा, और या तो इसका कहीं पे तो एप्लीकेशन आप आपके अपने टीचिंग में भी डालते होंगे, तो आई एम क्यूरियस टू नो दैट कि ये कैसे आप अप्लाई करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं। The thing is, I honestly, whatever, I'm a very impulsive person. तो जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ कि मुझे इसका लॉन्ग टर्म क्या करना चाहिए, even though I should, but like मैंने इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ा क्योंकि भाई अच्छी sounding degree, whatever, but then psychology I wanted to study for myself. So I was like, this has nothing to do with anything professional, whatever. This is just कि मुझे human behavior, human emotions को समझना है. And I can do this side by side. So I did my associate degree in psychology when I was doing my master of economics. It was pretty crazy to try to manage two schedules, but one was, of course, online. So it kind of worked out well for me. Both were 2 years together. And then teaching I always wanted to do because I just felt like this is the way I can learn myself and teach others, because when you're teaching, you're learning from your students much more than you're teaching them. I truly believe that my students have taught me a lot. And we just have like a 5-year, 6-year age gap. So I'm like an older sister to them. So I really love that about the whole teaching experience. But like, honestly, I didn't think कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे इसमें काम आएगा या ऐसा कुछ नहीं सोचा. सिर्फ बस शौक था तो मैंने कर लिया. एंड पोएट्री भी मतलब वो तो खैर लॉकडाउन की वजह से मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया. I challenged myself to write one poem every day, and at the end of 20 days I was like, ठीक है, इसको बुक बना लेती हूँ, let me try. And after it was just a challenge to myself. So Humaira, every day, कुछ भी हो जाए दिन में, no matter how many commitments you have or you don't have, you just have to write something. So after 20 days I had 20 poems. So of course the whole editing, proofreading वो सब बाद में था. But वो 20 poems को मैंने बोला ठीक है मैं book बना लेती हूँ, इसकी try कर लेती हूँ, try करने में क्या जाता है. So वो book आ गई. And yeah, so there was no plan कि भाई ये पढ़ना है कि ताकि मैं ये करूँ. It was just कि भाई मुझे इसमें थोड़ा खिंचाव आ रहा है. You know that gut feeling we have sometimes? You're like, just let's do it. So I was like, okay, let's do it. Psychology course, associate degree के लिए sign up कर लिया. Master in economics, ठीक है, अभी इको किया है तो मुझे इसमें थोड़ा और मास्टरी चाहिए, करने मिल रहा है मुंबई में ही, तो कर लेते हैं. And yeah, that's pretty much the whole. आपने साइकोलॉजी भी पढ़ा और आप राइटिंग भी करते हो, तो आपको कहीं पर भी मतलब have you tried to understand the psyche behind writing or reading? आपने जैसे ह्यूमन बिहेवियर को आपको समझना था, इसलिए आपने वो साइकोलॉजी की एसोसिएट डिग्री ली, राइट? तो are you able to connect the dots? Definitely, it's so helpful. I feel like साइकोलॉजी के कोर्सेस ना हर कोर्स मतलब हर जो भी आप पढ़ रहे हो होना चाहिए, बिकॉज ठीक है मतलब हाँ वो सब कोडिंग एंड बिटकॉइन व्हाटएवर फाइनेंस, ऑल ऑफ दैट आर ग्रेट एंड इम्पोर्टेंट disciplines, but psychology is, no matter what you are doing, you are dealing with humans. And you are a human yourself. Everyone wants to understand themselves and understand other people. Everyone wants to be emotionally intelligent, have that emotional intelligence for
their relationships from their personal life to their professional life. So definitely psychology, studying psychology has been very life altering for me, in the sense that I can think so much more about, but it's also a double-edged sword in the sense that I also think a lot कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि शायद ऐसा होगा, या ये अपनी फीलिंग्स मुझ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, या इसका कोई अपना मसला होगा, प्रॉब्लम होगी, so that overthinking also होती है. So it's a double-edged sword, but definitely it's important for that awareness, self-awareness, and society का awareness, लोगों का awareness. So definitely मतलब काफी help हुआ है psychology का मेरी writings में और just day to day की जिंदगी में. मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे आपने डबल एज स्वॉर्ड बोला ना कि एक ये होता है कि साइकोलॉजी और फिलोसफी दोनों मुझे लगता है कंपलसरी पढ़ना चाहिए सबको, क्योंकि ह्यूमंस को समझने के लिए दोनों फील्ड्स बहुत ही नेसेसरी है. तो जब हम साइकोलॉजी के बारे में, मतलब साइकोलॉजी में यार वो डिग्री हो सकती है या फिर कुछ भी, मतलब खुद से भी सेल्फ टॉट भी हो सकता है ना हम, तो उसके बाद ये होता है कि एक हम दूसरों को समझ लेते हैं इजीली, हमें पता चलता है, हम एम्पैथेटिक हो जाते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं कि हाँ कोई ये कुछ कर रहा है, कुछ भी मतलब सही गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो अच्छी बात है. लेकिन साथ में ये भी होता है कि एनालिसिस कॉन्स्टेंटली चालू रहता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो हमेशा रहता है. वो थॉट्स कभी स्टॉप नहीं हो पाते, वो चलते ही रहते हैं, दिन हो या रात हो, मतलब वो नेवर एंडिंग साइकिल हो जाती है फिर. Yeah, definitely. But then you realize that, when you study about like human behavior, you realize कि जो भी कोई कर रहा है ना, you don't take it personally. It's coming from their own. So you become so empathetic because you don't take it personally. And I feel like that's the best thing, because everyone, there's something called a spotlight effect in psychology. Everyone is only thinking about themselves. So yeah, I think that is, I feel like, the best thing, that you react to situations differently, because you're like, okay, he or she didn't want to hurt me. It's just they have their own issues going on, and they're probably putting it on me. They probably had a bad day, and I am the punching bag now. All of those things. So I think that is very important. You suddenly have a very calming reaction to situations, because you realize कि भाई ये मेरे अगेंस्ट नहीं है, उसका खुद का है ये, और शायद I'm on the receiving end of it right now, but yeah, so I think that is pretty important. Right. तो आपने बहुत सारी, मतलब आपने जैसे आपने न्यूम चॉम्स्की की बात की, मतलब बहुत सारे ईस्टर्न वेस्टर्न ऑथर्स को, पोएट्स को पढ़ा है आपने, मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफरेंट होता है ईस्टर्न फिलोसॉफी में और वेस्टर्न फिलोसॉफी में इन टर्म्स ऑफ पोएट्री और राइटिंग, मतलब क्या डिफरेंस आपको लगता है? काफी कुछ डिफरेंस है. डिफरेंस से पहले मैं ये भी एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि काफी सिमिलैरिटीज है, बिकॉज नो मैटर व्हाट योर कल्चर इज, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव आवर शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, whether you're living in Boston or whether you're living in Karachi. So that is something to be acknowledged. However, your culture, your environment, of course, has the varying differences. You see in Eastern poetry, there is, I think there would be more, there is more a sort of communal feeling, I feel like, because Eastern cultures are definitely more, they prioritize community over individual generally. Western cultures are more individualistic in nature, so maybe that. But then, so that is one of the differences which I have noticed. But I feel like that is maybe like a couple of 100 years back. Now that we have globalization, I feel like काफी similarities भी काफी बढ़ गई है. A poet in the US is probably going through pretty much the same that a poet in India is going through,
with regards to, you know, urbanization or decolonization, जो भी issues चल रहे हैं. So I feel like अभी के ज़माने में देखा जाए postmodern contemporary society, in that there's definitely a lot more similar experiences. Also with the advent of social media, you know, everyone's sharing stuff, sharing their writings right as it's happening. So I feel like in poetry also, for example, the Me Too movement, a woman in Europe is probably going through pretty much in terms of, you know, oppression, or when you look at feminism, she's probably going through similar issues that a woman in India or Pakistan is going through. So I feel like, you know, you asked me about differences, but I'm also looking at how connected we are right now because of social media, and as a consequence, that is being reflected in our writing. Like, I identify so much with so many of the postmodern poets who do not have the geopolitical climate or the cultural climate that I am living in. You know, for example, Rudy Francisco, he is an African American. Or, for example, Naomi Shabab Nye, she's a Palestinian American poet. I love her poems. I do not have the culture in common, but what she's still writing about in terms of spirituality or decolonization, I can really reflect and understand that. So yeah, I think at the end of the day, there are more similarities to our poetry and writings that we give credit to sometimes, I feel. मतलब एक डिफरेंस तो ये है कि इंडिविजुअलिज्म और जो कम्युनिटी वाली फीलिंग है वो दोनों ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफी डिफरेंस है, तो वो रहेगा. लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जब मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज वर नॉट इंडिपेंडेंट टिल अबाउट 100 और 200 इयर्स अगो, उसकी वजह से के टाइम के जो ईस्टर्न के पोएट्स थे उनकी राइटिंग में आजादी और वो सब that's a great point. हाँ, वही colonization versus हम जो उनके अंदर रहे हैं, जैसे for example British colonialism in India, Pakistan, or the French occupation of Algeria. तो उनके अंदर भी हाँ काफी Algerians ने French government के against भी काफी writings लिखी गई है, जो हाँ, that is a very very good point actually that you brought up. तब वहां पर जो पोएट्स है यूएस में, मतलब यूएस हमसे 200 साल पहले इंडिपेंडेंट हो चुका था, उनके लिए प्रॉब्लम्स अलग थे, तो उनके सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो पोएट्री हो रही थी वो भी डिफरेंट थी उस टाइम. लेकिन अब जैसे आपने बताया कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे कहीं पर कोई मूवमेंट हो रही है पॉलिटिक्स की वजह से या कुछ भी, तो उसका रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में सेम ही रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है कोई ना कोई कंट्री, तो सिमिलरिटीज हो जाती है. सही बात. तो हुमारा, you have been an avid reader, तो like मुझे भी ऐसा है कि रीडिंग it's an hobby, but वो रेगुलरली हो नहीं पाता है. तो what was your process and what were your inputs के जो आपको रीडिंग इतना रेगुलरली करने को मिला, and then how it has changed your perspective towards your work, life, whatever? Right. So I again, this goes back to my school. So I'm definitely very very fortunate enough to have studied from JV Parrot, which is, I mean, the best school in Mumbai and one of the best in all of India actually, if you look at the rankings. I mean, so that school gave me that ecosystem, that environment, which always encouraged me. We had like a library period every week, and we used to have a library card, and we used to, be able to borrow up to 3 books. So at that time, we didn't really care. We were just reading like Mary-Kate and Ashley and Meg Cabot and all these, chick flicks, or just that kind of stuff. But that didn't matter. What mattered is the habit that developed of reading. The content didn't really matter. Of course, we were also reading a lot then in the 9th and 10th.
We had an incredible teacher, Miss Bubla Basu, who taught us, who introduced us to really, really amazing literature. So that also encouraged me to read a lot in 9th and 10th standard grade. Of course, आदत college में छूट गई, काफी छूट गई. I was not reading regularly. But once I graduated, I had some, again, that free time, that interim period between के आगे क्या करना है. And that's when I also started reading the Quran. People look at it as a holy book, but for me, it's more of just like, it's for me, it was literature. It was just I wanted to get some sort of guidance and direction in my life. I've also studied some Christianity, Judaism. I've taken courses on comparative religion as well when I was doing my psychology course. So we had one of the courses. So one of the first things in the revelation in the Quran is the word ikra, which means read. And I found that pretty great. I really think that reading is the way you install software in your brain, software, hardware, whatever. Like if you look at a television, whatever is media, everything is being prepared and given to you. You are the consumer, you know, you are just consuming content. But with reading, it's the active, you're actively involved in trying to understand. You're seeing, okay, what does this mean to me? Why did the author say it that way? What word did he use? Why is he saying it? What am I learning? So you are actively involved. So you're not just consuming information, you're also creating some sort of content in your mind with that information. That is one of the reasons why reading is so, so important. And we all are reading. We're constantly reading posts on social media. We're reading newspaper articles or some sort of blog or whatever. तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से टाइम बनाना है बैठ के कि मैं बुक लेके पढूं. Whatever you like reading. If I don't like something, no matter how much someone tells me, if it's not important to me, I won't prioritize it. So number one is priority. If it's a priority for you, you make time for it. There are days, I mean, weeks when I'm not able to, open the book that I'm currently reading and properly read. But I'm still reading maybe something that I found on Instagram and I've saved that post and I'm still thinking about it. So what matters is that you read what you like so that you don't lose interest. And that shouldn't feel like a chore to you. Shouldn't feel like how you get really bored or exhausted with doing the dishes. It shouldn't feel like doing the dishes. It should, so number one is if someone doesn't like reading, I want them to ask themselves कि क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि आप शायद अपने आप को फोर्स कर रहे हो कुछ पढ़ना जो आपको नहीं पढ़ना. मुझे पोएट्री आज नहीं पढ़नी तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगी. I will not force myself. I will read some, I don't know, Murakami or like just something else, So number one, you make sure that you're reading what you like. Number two, you do it. You try to capitalize on, okay, ठीक है, अब मैं रास्ते में हूँ, शायद मेरे रास्ते में बुक नहीं पढ़ी जाती तो मैं उसका ऑडियो बुक पढ़ लूँ. तो वैसे सब जो चीजें हैं, we know our lives and our schedules well enough to know how we can fit it in. You maybe want to carry a Kindle, ठीक है, Kindle में पढ़ लो. You can carry मतलब ebook आपके Apple books में है, जो भी है. तो अगर आपको करना है, where there's a will, there is a way. So number one is priority, prioritize करो. Number two, फिर फिर आप सोच के देखो ना कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ. And read what you like. Don't force yourself is what I tell people. If you like reading, one of my friends was telling me that, I read romance novels यार, मतलब मैं आज तुम्हारे जैसा ये philosophy वगैरह नहीं पढ़ती हूँ. And I was like, ठीक है, आपको नहीं पसंद philosophy, आपसे नॉन फिक्शन और ये सब चीजें नहीं पढ़ी जाती तो फोर्स मत करो. आप रोमांस नॉवेल्स पढ़ते रहो, ठीक है. एक दिन अगर आपको कभी लगा तो ट्राई कर लेना. So never put yourself down for the reading choices that you make is another thing. People are like, हाँ मेरे से ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़े जाता. ठीक है, मैं भी जब कोई भी अपनी माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आया है. आपको सीखना है. कितना भी आपको स्कूल और कॉलेज में भी सिखाया है कुछ चीजें आपको
आपका जो experience है वो सिखा देगा. So just be open and read what you like. If you like reading some children's books, if you like reading classics, read it. A lot of the literature that is given for children, for example, Roald Dahl, Enid Blyton, I can go back and read it. I mean, सबके अंदर एक बच्चा, you want that, you want to probably relive your childhood, you have that. So I also feel that, like, don't judge yourself, read what you like and keep at it, Yeah. ऐसा हो रहा है ना अभी के रीडिंग को मेन स्ट्रीम करने के चक्कर में बहुत सारे लोग रिकमेंडेशंस देते हैं यही बुक पढ़नी चाहिए, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ रीड दिस मेनी बुक्स, और ये करो वो करो. उसकी वजह से जो चेकलिस्ट बनता है ना, उसके लिए लोग अपने आप को फोर्स करने लगते हैं कि मुझे नॉन फिक्शन में ये सेल्फ हेल्प पढ़नी पड़ेगी, अगर ये नहीं पढ़ा तो मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया. वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो प्रॉब्लमेटिक है. और मुझे उससे बहुत दिक्कत होती है जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी आके बोलता है ना कि रीड दिस मेनी बुक्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर लाइफ, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ. मुझे लगता है कि वो बुक्स पहले साइड पे रख दो. कैसे हो सकता है? रीडिंग शुड बी हॉबी, मतलब वो खुद से अगर अच्छा लगता है तो कोई पढ़ रहा है. ऐसा कोई कंपलसरी जैसे कोई कोर्स कर रहा हो या कोई पढ़ाई कर रहा हो वैसे थोड़ी करना चाहिए कि हाँ ये इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स तो मुझे पढ़नी पड़ेगी, वरना उसके अलावा आई कैन नॉट बी अ बेटर पर्सन. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हाँ, ये भी देखो ना मसला. आई थिंक द इशू इज आल्सो, आई वुड blame like radical capitalism for this, because it's like, okay, you read more. Now there are courses to how to read faster, how to read, how to change your life after reading. ये सब चीजें से लोगों को पैसे कमाना है. But सबको first of all सबको fast नहीं पढ़ना. I want to read to slow down. मतलब life already काफी fast है भाई. But of course there's another flip side कि you don't, like, if people definitely want to like make money out of reading and all of this, fine, that's your thing, you do you. I also believe that, so that's okay. The only thing is, of course, my problem with a lot of self-help books is that it's just short stuff that they've stretched it throughout in the book, same idea, or अलग-अलग books, they just say the same thing in very different words. कोई flowery हो गया, कोई थोड़ा और practical हो गया. So it's just like, I feel like then it's the responsibility also of the writer कि भाई आप मतलब don't waste my time. Just if you can tell it to me in a blog post, why write a 200-page book on it? So now there are apps for this also कि हम summarized version बता देंगे ताकि आपको पढ़ना नहीं पड़े, but आपका तो पढ़ो ही मत, बट आपको पूरी समरी दे देते हैं ये ऐप में, और आप उसके बाद जाकर उसको अप्लाई करके पैसे कमाओ, ये करो वो करो. हाँ, so okay, fine, if you really want to, like, for example, if I want to invest in shares, I will be reading books about the stock market, all of that. So that's fine, that's my intention. I want to make money, I want to invest in shares, so I'm reading for that intention. But yeah, so at the end of the day, I think what really matters is everyone, you just identify, okay, are you reading to slow down? Then don't go to these motivational gurus who ask you to read 10 self-help books and change your life in 10 days. Yeah, but if you want to like be like, ठीक है भाई मुझे तो आज सब कुछ तूफानी करना है, सब पढ़ना है, change my life, then go ahead, read all the books you want and be fast, do whatever. So yeah, as long as you identify what's the reason, when you identify your why, the how becomes easy. Like if I know why I'm doing something, I'll be like, okay, I will know how to do it. So for me, reading is it can be an escape from reality, so I would read fiction for that. It can be a way to better myself, so that I would probably read some spirituality, or I will go back to the Quran, the book that I look up to when I want to like look at myself. If I'm reading some for like my research purposes, then I will be reading journals and technical stuff, that sort of, the research papers. I don't know if people still read research papers or just read the abstract and ignore the rest. But so once I identify my why, then just go ahead and
do I, your I thing. feel that radical capitalism that you mentioned, I agree with that, because what happens is this change your life, this phrase is overly used, right? But मुझे लगता है कि change your life can be, can be done in hindsight. जब आप सब कुछ जानने के लिए, क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए पढ़ते हो, कुछ सीखते हो, जब हाइंडसाइट में देखते हो तब आपको पता चलना चाहिए कि माय लाइफ हैज चेंज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब मुझे लाइफ चेंज करनी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ डू यू इम्बाइब दिस? आई वांट टू चेंज माय लाइफ, हेंस आई वांट टू रीड इट। नो, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर रहा हूँ और सीखता जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता जा रहा हूँ। तो हाइंडसाइट में जब मैं देखूंगा, जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचूंगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड आई हैव रीच्ड हियर। अब वो लगेगा कि हाँ, आई हैव चेंज्ड माय लाइफ। लेकिन ये नैरेटिव बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है कि इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू नीड टू रीड दिस मेनी बुक्स एंड यू नीड टू डू दिस एंड डू दैट। अब दूसरा मुझे ये भी लगता है कि बुक का पर्सपेक्टिव ये नहीं होता है कि बुक को खत्म करो। मतलब हमेशा कोई भी बुक इसलिए नहीं लिखी जा रही है कि आपको सब कुछ एंड टू एंड, कवर टू कवर पढ़ना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उसमें से सिर्फ 2 ही पैसेज पढ़ना है और बाकी सब आपके लिए, आपको नहीं लग रहा है कि पढ़ना चाहिए। 2 पैसेज भी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें से। वो भी एक, जैसे गुड रीड्स और बहुत सारी जगह पर चैलेंजेस होते हैं, राइट? के 1 साल में कितनी बुक्स पढ़ोगे आप, उसका चैलेंज ले लो। इतने टाइम में कितनी बुक्स, कितने पेजेस खत्म करोगे, उसका चैलेंज ले लो। और किंडल अगर आप यूज करते हो तो किंडल का जो मोबाइल में वर्जन है ऐप, उसमें वो दिखाता भी है कि आपने इतने दिन का स्ट्रिक्स बनाए हैं या फिर इतना पढ़ा है आपने। वो स्टेटिस्टिक्स जब आ जाते हैं ना, तब लोगों को लगता है कि ये रेस है, जल्दी बुक खत्म करनी है, कंप्लीट करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। ऐसे थोड़ी, मतलब ये पर्सपेक्टिव वहां पर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम ज्यादा लोग, ऐसा होता है जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमसे हैवी चीजें नहीं पढ़ी जाती या फिलोसफी या कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि सब लोग पर्सपेक्टिव ये रेस वाला रखते हैं ना कि हाँ, मुझे ये स्टार्ट किया तो मुझे ये बुक खत्म करनी पड़ेगी, या फिर इतने टाइम में मुझे समझ लेना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो आई एम डम एंड आई शुड नॉट रीड दिस। वो पर्सपेक्टिव गलत है। उसकी वजह से रीडिंग को जितना जस्टिस मिलना चाहिए, रीडिंग को, इतने सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स हो चुके हैं, इतने अच्छे पोएट्स हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनको पढ़ते हैं, जो इनको एंजॉय करते हैं। कितने अगर गुलजार अगर मेन स्ट्रीम नहीं हुए होते तो कितने लोग गुलजार को पढ़ते? अगर वो बॉलीवुड में उनके सॉन्ग्स या उनके मूवीज नहीं आते, जैसे फैज है या फिर अहमद फराज है या फिर जॉन एलिया है, वो सब इतने अच्छे पोएट्स है, लेकिन उनको पढ़ने वाले लोग वही है जिनको पोएट्री से प्यार है। उनको मेन स्ट्रीम में किसी को कोई याद नहीं करेगा उनको। वो मुझे लगता है कि एक इश्यू है। जब तक ये पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा, तब तक ये रीडिंग के बारे में, तब तक ये इतने अच्छे पोएट्स, राइटर्स, ईस्टर्न वेस्टर्न कहीं के भी हो, तो वो पढ़े नहीं जाएंगे, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। I agree with a lot of things. I'm still trying to remember what I wanted to say, but yeah, I mean, I also think that I mean, we can like blame. I mean, I am always ready to blame radical capitalism for most of the problems in the world. नहीं, जो आपने कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, मुझे उसका एक रिप्लाई देना था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स वाला, लाइक, सो आई शेयर माय एक्सपीरियंस फॉर द सेम एंड इट लाइक जैनिश थ्रू द लाइट ऑन दिस टॉपिक कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, उन सबको ऐसा ही है कि you do this according to us and you will succeed. Then Janish and one of my friends, they both said कि motivation ऐसी चीज है ना कि it comes from within. Like if you watch a motivational movie or read a book or else a talk, it will last for like 1 day, 2 day or 1 week. But then उसके बाद का जो motivation है ना, it has to come from within. So वो एक बात है जो मुझे ऐड करनी थी, जो आपने जो आपकी क्या बढ़ास जो निकाली है ना। I get very aggressive when it comes to motivational speakers. I know. So yes. I just remembered 2 things before I forget. Number 1, when you spoke about Janish, you spoke about like this compulsion to finish a book.
few years back I was like that. I was like, मैंने start की, मुझे खत्म करनी है, कितनी भी बुरी है, अच्छी नहीं लग रही, I used to force myself. But now I don't know, maybe it's lack of time and patience. But if I'm not enjoying it, I don't force myself. I tell myself it's fine, it's okay. There is no rule that I have to complete a book and I have to read cover to cover. That's one point. The second thing you spoke about, the change making thing, कि सबको fast change चाहिए. But I honestly do believe that nothing good and life changing happens overnight. If you do, it's like expecting to win the lottery, but that doesn't happen to everyone. Number one. Number two, and even if it happens to you, like most, if you look at lottery winners, are like there are studies which talk about how they're not really that happy and then they spend all their money also. क्योंकि इतना fast आया है तो चली भी जाता है. So I feel like good things take time. Change takes time because you have to appreciate the whole process from the caterpillar to the butterfly. So that is one thing that I wanted to talk, the idea when you spoke about how, motivational speakers with their, okay, ye kar lo, ye jo maine ideas book mein se nikale hai, power of habit, this, change your habits in one day. Some people are struggling to change their habits all their lives, from their sleeping schedule to your eating habits or whatever it is. So this whole it's a facade, wanting to quickly change things overnight, and this overnight success कि इतने दिन में इतना वजन लूज कर लो, इतने दिन में इतना पैसा कमा लो, इतने दिन में ये आप 10-day course करके स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन पे एक्सपर्ट हो जाओ. अरे भाई वो पूरा process, the process, the journey is more important, right, than the destination. Yeah. So पर उसमें एक और चीज है कि जैसे अगर मुझे मान लो कि मुझे स्विमिंग आती है और मैं दरिया में भी डुबकी लगा के आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कैसे होता है, कितनी गहराई है, कहाँ तक जाना है, कहाँ से वापस आना है. अगर मैं बाहर आके अगर हर्षवर्धन को मैं बोलता हूँ कि भाई उसको कुछ भी नहीं आता, करना नहीं आता, और मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने ये पूरा चेक कर लिया है तो तू इतना इतना कर सकता है, तो हर्षवर्धन के पास दो ऑप्शंस है. आइदर ही कैन चूज टू लर्न स्विमिंग, और वो शॉर्टकट ढूंढेगा कि हाँ जैनिश ने जो बोला है ना, उतने में ही रहता हूँ मैं, उतना करके वापस आ जाता हूँ, उसने तो बोला है तो सही होगा. तो ऐसा होता है कि जब भी कोई, अगर मैंने बुक पढ़ी है और उसमें से मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन के स्टेज पे जाके सबको बोले जा रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने जो अपने आप से पढ़ा है उसको समराइज करके अपना प्रॉफिट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल के मैंने बोल दिया. बाकी लोगों के पास ऑप्शंस है कि वो खुद से जाके पढ़े, लेकिन वो जब शॉर्टकट जब तक ढूंढते रहेंगे तब तक वो खुद से जाके नहीं पढ़ेंगे, खुद से कुछ नहीं सोचेंगे. और हाँ, इन्होंने शॉर्टकट दे दिया है तो हम क्यों मेहनत करें. Yeah. ऐसा ही होता है. And there is beauty. I agree that there is beauty in the struggle. So if you're really running away from the struggle, you're running away from so many opportunities for growth and self-discovery and all of that. So yeah, I agree with everything that you said. Gautam Buddha said that there is a human, there is suffering. जब तक humanity there is. Suffering is inevitable. Right. तो हमें मतलब कोई भी हमें आके फेरी टेल सुनाए या फिर हमें कोई भी आके दिखाए कि आई हैव अ शॉर्ट वे ऑफ एलिमिनेटिंग दिस मच ऑफ सफरिंग, तो वो गलत है, क्योंकि वो सबके लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर वो नहीं होगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि क्या, मतलब हाउ विल वी कम टू द मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, वो कहाँ से पता चलेगा. I also believe that suffering को glorify नहीं करना चाहिए, but at the same time उसको deny भी नहीं करना चाहिए. ये life की reality है, मुश्किलें होंगी. हम पैदा ही suffering में हुए थे. When you and I were born, we cried. That is how we began our lives. When we die, also people are going to be grieving our loss, and in the middle also there's just so many challenges you're going to go through. So yeah, of course, it's inevitable. ये इन सभी बात ना, जो ये सब टॉपिक्स पे हमने बात की, उसके बाद लाइक दिस लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, कि आपने जैसे कहा कि यू रोट 20 poems in 20 consecutive days, and
if I'm not wrong, it is the same book that is coming out, right? जो poems की आपका जो एक collection है वो, तो just throw some light on that, and then we can, move towards the end. Okay, thank you for asking all the questions. So yeah, though just something that I challenged myself. वैसे सोचा नहीं था कितनी लिखना है, क्या करना है. सिर्फ ऐसा 10-20 सोचा था, तो 20 days में हो गई. Then I submitted it to the publishing house. They liked it, they accepted it, and it of course it was it's been, I think, 3 to 4 months now in the whole proofreading, me trying to figure what I want to like title the book. I also designed the book cover myself, so trying to figure out the whole cover idea. What do I want? That really represents. This is my first book. There was a lot of overthinking, a lot of doubts. I've titled it I'm Looking, I'm Looking, and I've divided it into 2 parts. Looking outward is part number 1, 10 poems, and looking inward is part number 2, 10 poems. I've dedicated the book to my nani, my grandmother, who actually passed away in April. And I've also dedicated, so it's in her memory. And I've also dedicated the book to my grandfather, my Nana Abba, the one who encouraged me and always supported me and who brought us up with Urdu shairi and stories. So I've dedicated my book to my Nana Abba and also to my parents, of course, who have, given me everything. So yeah, the in short, just these poems are everything against radical capitalism, patriarchy, bolo, also gratitude. Everyone wants that sort of positivity in their life, which is appreciation for daily things. A lot of reflections about for example diet culture बोलो लड़कियों का हमारे जो वो हो जाते हैं eating disorders वगैरह के बारे में just the role of women in society. I wrote one poem about hijab also. उसके भी काफी वो एक अलग topic है उसके भी काफी judgments रहते हैं. तो सब कुछ जैसे just shared human experiences, a psycho spiritual analysis मैंने वो book के बारे में लिखा है back cover पे. So it's that, and I'm so nervous but also so excited कि मतलब मैं तो दुनिया में सब जगह पहुंच नहीं सकती, but ये जो words रहते हैं ना वो पहुंचते हैं. तो आपके जो लिटरेचर राइटिंग है आप वो लोगों को उसके थ्रू रीच कर सकते हैं. और दिस इज जस्ट माय honestly just a small attempt for me to try to like share what I've been reading and learning all these years in the form of these short 20 poems. So yeah, thank you so much Janish and Harsh. Thank you guys for like asking me about my book. As you can see, I'm really excited but also nervous, and I'm excited we for wish you you guys all the best for that. Thank you. I'm excited for you guys to read it and to your thoughts on it, because of course you guys are also such amazing like writers and engineers. So आपका उस पे जो perspective रहेगा वो काफी unique रहेगा, with each of your own backgrounds and knowledge and experience. So yeah. आपकी बुक कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगी? So definitely it'll be on Amazon and Barnes and Noble and Kindle and a couple of others, but it will be available as a copy in throughout India. I mean the physical copy, you can order it on Amazon, and only on ebook, Kindle, Barnes and Noble for outside of India, because the publishing house is unable to currently ship it. So if you're outside of India, then the ebook Kindle version. Okay. And if it's in India, then you can order it on Amazon. It's going to be listed very soon on all the major platforms. Congratulations for that, and we are thank excited you so much. to read your book. So thank you Humaira for joining us today. It was a pleasure. Thank you so much for having me. It was. Thank you so much for having me. I learned so much from you guys. This was a great conversation, and I'm so excited for for future conversations as well. Yeah, definitely. We can do more podcasts on we look forward. Yes. Yeah. As always, Thank this you. has been one of the finest episodes of our series, and we are very fortunate. That's so sweet. Talk to you about reading and writing and stuff. So thank you very much. Thank you so much for having me, guys. See you guys. Bye. Thank Bye. you. See you. Stay safe. You too. So this was it. जैसा हमने देखा कि Humaira, who belongs to economics as well, psychology as well,
academia as well, and now she is launching her own book. Well, जैसा सबसे बेस्ट पार्ट वाज कि जो रीडिंग की बात उन्होंने कही कि रीडिंग इज इट्स अ टॉपिक व्हिच इज नॉट टू बी टेकन वेरी सीरियसली, बट उसको खाली आप प्रायोरिटाइज करके दिन में थोड़ा 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 करके पढ़ोगे तो विच इज इनफ. एंड स्टॉप फोकसिंग टू मच ऑन रेडिकल कैपिटलिज्म, जैसे जैनिश ने अपना एग्रेशन दिखाया था उस चीज पे, मोटिवेशनल स्पीकर्स पे दिखाया था. तो stop taking things way too much seriously and stop comparing yourselves. So this was it from our side. Well, Janish, if you could please end the podcast in the very, very, very conventional way. So, so all those who are watching this or listening to this podcast, make sure you share this episode with as many people as possible. Also, you can subscribe to our YouTube channel. And we are also available on various audio streaming platforms like Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, Spotify, and various other streaming platforms out there. So you can not only watch our videos, but you can also listen to our podcast whenever you are traveling or wherever you are doing any other activity. So that's all from us. Stay happy. That's all from my side as well. Yeah. Thank you very much. Good night, good morning, good afternoon. Bye-bye. See you. Bye.